Welcome, Salam sir. How are you? Alhamdulillah, sir. How are you? I'm fine, dear. Alhamdulillah. Thank you so much for asking. Okay, so let us start the class. Okay, so we are going to discuss the lens formation, image formation of lenses. Okay, so let's start. Okay, my screen visible, everybody? Is my screen visible to all of you? Yes, sir. Yes, चलो sir. ठीक है तो in the last class let me show you what we have done so far. We have done the concave mirror at infinity, concave mirror beyond C, concave mirror at C, concave mirror between C and F, and concave mirror at F, and the last is the virtual image case in which the concave object is placed between focus and pole. ठीक है and convex mirror does basically have only two cases, which is at infinity or between pole and infinity. So only two cases are there. In the lens, it is the opposite. In convex lens, 6 cases are there, and in concave lens, only 2 cases are there. Okay. So don't get confused in the lens and mirror. So basically, let's start with the first thing, that is the convex lens. Okay. So now first case is the आपकी first case है at infinity. All the 6 cases are similar, are same, exactly same, only the lens is placed instead of mirror. So at infinity, your first case is at infinity, everything will be repeated. Okay, so this is the so this is your mirror, convex mirror, sorry, convex lens, not mirror, sorry. Okay, and this is the what it is called, can anybody tell me? Hello, what it is called? This is called principal axis. ठीक है, so basically this is your F, ठीक है, F1, this is your 2 F1, this is the primary focus and this is your secondary focus, ठीक है. So somewhat will be like इतना, हाँ यहीं पे होगा almost. This is F2, ठीक है, this is your 2F1, 2F2, sorry, ठीक है. So and this is your this is called as optical center, ठीक है, optical center of the lens. Yeah, just like as pole has mirror has pole, and lens has optical center. So your basically rays are coming from the infinity. Object is infinity, so rays would be parallel to the principal axis. Clear? And you need two rays, so two rays will be parallel. And at which point it will get focused? Tell me. It will focus at F1. F1. Very good. They will merge at focus. So now this is your first case, which is very straightforward. Okay. Okay. So what will be the value of u here? This is u. U is at infinity. ठीक है. V is equals to at focus. Clear है? And what is the nature? Real and inverted. Very good. Real and inverted. इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ. So this is lens, right? Convex lens. हाँ हाँ बोला convex lens है. तो concave mirror कब किया हमने? Concave mirror का Sorry, convex mirror कब किया हमने? क्लास में. अच्छा, तो यहाँ पे तो साहब आप क्लास में ध्यान से नहीं, मैं क्लास में रहोगे. था. यहाँ पे concave mirror का तो लिखा है मैंने, लेकिन convex का नहीं लिखा. नहीं देखो, ये देखो लास्ट में हम लोगों ने किया ये रहा कन्वेक्स मिरर ही है ना, ये देखो लिखा हुआ ओह हाँ हाँ कन्वेक्स हाँ, मिरर ओके किया है ओके ना. ओके. हाँ जी. कैसी बातें कर रहे हो यार, मुझे झुठला रहे हो क्या? अरे नहीं सर, क्या बात है, आपको थोड़ी ना झुठलाएंगे. अच्छा चलो, साइज अब बताओ, इस साइज भी क्या नहीं होगा है. इसका?
highly diminished. Highly diminished. हाईली डिमिनिश्ड या diminished. पॉइंट साइज कह सकते हो आप, ठीक है। फर्स्ट वाला केस तो सबको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर होगा, आई थिंक सो, ठीक है। सो दिस इज द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट इज जस्ट अ सेकंड। Next is at, so now your object has moved forward towards optical center. It means that would be 2f2, beyond 2f2. Okay. Second case is beyond C, whatever you can say this as C as well. 2f2 means C, center of curvature. Okay. Beyond 2f2. Now your object is placed between, so I'm just copy pasting it. Yeah. So because just a second, copy paste करके मैं इसको ये रेस को erase कर दूंगा। ठीक है। Just a second, let me share my screen. So यहाँ पे मैं इसको रेस को erase कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो आप कि योर ऑब्जेक्ट इज एट 2f2, बियॉन्ड 2f2 आप कहीं भी रख दो, यहाँ पे भी रख सकते हो, ओके। सो सपोज दैट योर ऑब्जेक्ट इज एट 2f2, क्लियर है? सो व्हाट विल बी द फर्स्ट रे दैट शुड बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बोलो यस और नो? Yes, sir. First ray should be parallel to principal axis. This is the fundamental case. Whatever you, if you have to find out how, so you need at least two rays. So first ray should always be parallel to the principal axis and it will converge at the focus. Clear? Like this. So first ray is done. And the next is now, can anybody tell me from where should I pass the second ray? From optic center. Yes, from optical center, it will go without any deviation. It means that it will not refract like this. Clear? So like this. I'm trying to be a little bit more symmetrical so that आप लोगों को proper image मिल पाए, because अगर आप यहाँ से थोड़ा सा understanding हो जाएंगे, so that would be much easier to draw in these exams as well, ठीक है? So I'm trying to be more accurate as I can, ठीक है, as much as possible. So you can see this thing, ये थोड़ा सा displace हो गया क्या, यहाँ थोड़ा सा displace हो गया इसको वो करने के चक्कर में, ठीक है? अब ठीक है। So देखो, so if the object is beyond 2f2, basically your image is basically you are getting an image between f1 and 2f1 and 2f1, yes or no? Yes, sir. Okay, so like this. Okay, so let me write down the properties of the, so object is beyond 2f2, ठीक है? v is equals to between f1 and 2f1, ठीक है? What would be the nature? Real and Real and inverted. inverted. Real and inverted, very good, ठीक है? साइज Diminished. Diminished. डिमिनिश्ड, देख रहा ना, छोटी है, डिमिनिश्ड। Clear till now? Is this clear to everybody? Please let me know. Yes, sir. Any doubt? Abdullah, Karishma, Kiran, Jasleen, No, sir. Jopitha, Abir, Tejasvi, Shweta. एक No, देखो, sir. 10 students are there. If I forgot to speak or shout out anybody's name, please don't mind. क्योंकि like 10 students, like not 10, I think 8 students are there, na? 8 students are there.
so it's a little bit difficult task. तो ठीक है. So third case पे आते हैं. So now your object, now next position would be, can anybody tell me what will be the next position of the object? Between 2F2 and F2. No dear, that would be at F2 F2, ना, F2. because beyond to F2 आ गए हम लोग, and now its next position would be at F2. Clear? At F2. ठीक है? Yes. Yeah. The position you have said is after 2F2, then you will go forward between 2F2 and F2. ठीक है? Now the focus at image is at 2. Basically your object is at 2F2. I'm just copy pasting again. Just a second here, so that I don't have to draw this diagram. I will just make the rays again. देखो मेरे लिए तो आसान है, मगर आपको एग्जाम में जब करना होगा ना, थोड़ा सा आपके लिए, अरे यार क्या ड्रामे हो रहे हैं लैपटॉप के, वन नोट में आके ड्रामे होते हैं लैपटॉप के, पता नहीं क्यों. ठीक है. Just a second. मैं रेस को रेस कर देता हूँ. ठीक है. तो now your object is at, can anybody predict what will be the size of the object? The size of the image will be same as the size of the object. Very good, very good. So first ray should be parallel to the principal axis and it will converge at the focus. ठीक है. Can anybody tell me the second ray? Where should I pass the second ray? Again, at basically at the from Optical the center. optical center. So just a second. Or you can pass from the focus. Focus से अगर pass करोगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा proper वो मिल जाएगा. If you pass the ray from the focus तो थोड़ा सा ज़्यादा accurate आपकी shape image मिल जाएगी ना आपको. यहाँ पे अगर देखो तो converging point आपका थोड़ा सा focus 2F2 पे आ जाएगा. लाइक ऑप्टिकल सेंटर से भी आ सकता है, बट मैं इसलिए कर रहा हूँ, व्हाई आई एम डूइंग दैट, सो द मेरा पॉइंट, क्योंकि मेरा थोड़ी सी एसिमेट्री है, बिकॉज आई एम ड्राइंग दिस फ्रॉम माय रफ हैंड. सो आई होप यू आप लोगों को ये समझ में आएगा कि when you will draw from your basically the ruler scale everything, you will get the exact positions. Clear है? Please let me know everybody, please confirm to me. Yes, sir. ठीक है. इसको थोड़ा सा मैं पीछे शिफ्ट कर देता हूँ टू F1 को. ठीक है. सो ये आपका, so now this is the object size will be, and the image size will be as same like similar to the exactly equals to the object image object size. Image size will be same. ठीक है. You can also pass through from the optical center. The rays will converge, basically will intersect at this 2F1. ठीक है. 2F, 2F1. But I've just done this thing to get the exact, so that due to asymmetry in my diagram because of the rough hand drawing, so this is 2F1. Clear everybody? So almost also remember, draw the red arrows as well. ठीक है. Always draw the arrows. I just forgot to mention it. Draw the arrows. It will basically give you the idea where the ray is going. In all the diagrams, always draw the ray arrows. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Clear everybody यहाँ तक? So let's write down the characteristics. U is at 2 F2. V is at 2 F1. Nature, real inverted. Clear है?
Size. What would be the size of the image? Same size. Same size as Same object. size. Okay. This is the third case. Let's draw the fourth case. Okay. Let me. So fourth case is between 2f2 and f2. Clear? Hai? Just a moment here. लैपटॉप फ्रीज हो गया. यार कुछ सजेस्ट कर दो आप लोग मुझे इसकी ये जो प्रॉब्लम होती है, किसी को अगर कुछ आइडिया हो तो. परेशान हूँ इसको लेकर. Like my RAM is enough, my storage is also enough, but don't know इसमें आके क्यों लैग करता है ये. तो हाँ, इसको मैं ज़रा इरेज कर देता हूँ. ठीक है. और इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है. Now your object is between f2 and f2. Clear है? Yes, sir. Okay. So first ray should be parallel to the principal axis and it will converge at where? At focus, primary focus. Clear है? ठीक है. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट रे यू कैन डायरेक्टली पास इट. चलो यहाँ से मैं ऐसे नहीं करता, यहाँ से मैं फोकस से पास करा देता हूँ इसको, सो दैट मुझे थोड़ा सा और एक्सटेंशन मिल जाए आगे तक एक्सटेंड करने का. सो ऑलमोस्ट सही है. तो मैं 2f2 को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर देता हूँ. मैंने 2f1 को सॉरी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया. So you can see this thing that the image is formed beyond 2f2 and a little larger than the object. Yes or no? देखो, from the ray diagram you can also observe this thing. Yes or no? बोलो. Yes, sir. ठीक है. देखो, I'm trying to draw this as symmetrical as possible. ठीक है. So this is this and the arrow sign is this. Arrow sign represents what? It represents the direction of ray, light ray. ठीक है. You can also pass through the, you can say, optical center. It will also go there, but due to asymmetry I have to pass through the focus so that I can थोड़ा सा मुझे यहाँ पे extension मिल गया, मैं आगे थोड़ा इसको shift कर सकता हूँ. इस वजह से मैंने ये draw किया है. क्लियर है? बस ये थोड़ा सा आपका रे पैरेलल होगी ये चीज. जो कलाकार होगा इस क्लास में उसको कदर होगी इस कला की. कौन कौन है आप फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाले है? कोई है क्लास में? कोई भी नहीं है? So what? I'm asking that does anybody have any interest in the fine arts or drawing? So I have. Okay. Sir, I have. Okay, that's good. Okay.
So now, so let's move forward to the next case. That is, but now it's between 2f2. What should be the next case? Can anybody tell me? It would be at f2. F2. Very good. At f2. Just a second. Okay. So let me raise this drawing. Okay, so if the object is at f2, I'm placing object at f2. Can anybody predict where will be the image? Infinity. At infinity. So it means that the ray will not converge at, the rays will go parallel. So if this is infinite, at first ray should be parallel and another ray would be like this. Okay. So it would be just a second. Parallel rays? Parallel. So first ray is going in this direction and the second ray is going in this direction, and they are parallel to each other and they are like this. So this is the simplest case, similar to the first case. Okay. So U is at infinity. So U is at for F2. F2 पे ना, ठीक है, और V है आपका infinity. नेचर क्या होगा? Real and और साइज highly enlarged. हाईली enlarged और यू कैन से हाईली मैग्निफाइड, दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हो आप. ठीक है, हाईली enlarged. क्लियर है? Any doubt to anybody Yes. till now? Please let me know. देखो हमने 5 केस कर लिए. 6th case is the last case, and this is the only case in the convex lens in which the image is basically virtual. These are all image are basically what? Real images. Clear? They can be obtained on the screen, but the last one is between f2 and o. This is the case which is used in magnifying glasses. ठीक है? So ये वाला केस आपका मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है. आप जब मैग्नीफाइंग ग्लास देखते हो तो वो आप यही वाले पोजीशन पर रख के देखते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को. क्लियर है एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. So basically you okay, so let me raise this. Okay, so इसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर लेते हैं इसके साथ. थोड़ा सा ऑब्जेक्ट मेंटेन है. ठीक है. हाँ, ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन f2 and so first ray should be parallel and it will pass from where? It will pass through the basically focus. बोले yes or no? Clear है? Yes, sir. And second ray basically it will pass through the optical center like this. Okay, so you can see this thing, these rays two basically are going in the different directions, so they will not intersect at any point actually.
Yes or no? Yes, sir. So what you will do is that in such cases, you can basically extend the rays in the backward direction. So if you extend this ray in the backward direction like this, if you extend this ray backward direction like this, so you will get an enlarged image. Like it is not specifically that it would be between f2 and 2f2. Like only the image image object, oh sorry, image distance, image position is specified behind, basically on the same side, not behind, on the same side of the lens. Okay, you will just write what on the same side of the lens. Clear? Everybody got my point? Yes, sir. Between f2 and o, v is equals to, v कितना होता है आपका? हाँ, v आपका होता है सेम साइड ऑफ लेंस. नेचर क्या होगा? Virtual and direct. Virtual Virtual. and direct. Very good. ठीक है. Size Enlarged. only enlarged. Very good. So these are the 6 cases of convex lens. Please let me know, does anybody have any issue till now? Be honest with me. देखो, I've written and No, I've drawn the diagram from the scratch, how to use the rays, how to implement, and how to extend, like all the things I've done from scratch. Please let me know, does anybody have any doubt till now? No, sir. No, sir. Sure, everybody? Yes, sir. Yes. Yes, Sure. sir. Okay. Karishma, once again, like Hiba, Abdullah, Abir, Jobita, Jasleen, Kiran, Shaima, Shweta, Tejasvi. All of you got my point. Raise your hands if you got my point completely. Raise your hands in the chat. Okay. Still 5 left. Oh, sorry, 4 left. 3 left now. 2 left now. Jobita and Shweta, you are left. You are not clear with this? Clear, sir. Raise your hand then. I just want the confirmation, a proper confirmation that you got till Yes, now. sir. Okay, ठीक है. Jobita, आप, you are left only. Sir, I'm not able to send. You are not able to. Send. So like, okay, you are not able to raise your hands in the chat, right? Yes, sir. Okay, okay. So did you get my get the point what I've basically covered so far? Yes, sir. Chalo, ठीक है. So now all of you are saying that all of you are completely fine with this. So you can all lower your hands. I'm writing here. So convex lens is done. Now it's time to do concave lens. ठीक है? Okay, okay, Jobita, okay, ठीक है. Jasleen, dear, you can lower your hand. Concave lens. So similar to convex lens, convex mirror, concave lens only have two, you can say cases, which is again at infinity, and the object is placed between infinity, optical center and infinity. Okay. Let's do the first part. At infinity. At infinity. Okay. So let me paste the figure here. ड्रॉ नहीं हो सकती थी ये, तो मैंने अब एक फिगर ले ली थी नेट से, सो दैट आपको थोड़ा सा और मैं इसमें सिमेट्रिकली शो कर सकूं. This is principal axis, basically passing through the optical center. This is your optical center, suppose. Just a second. This is your optical center. Okay. So now I'm assuming this one is f1. This one is f2.
2f2, 2f2. f2. सो आपका क्या होता है इसमें, ये 2f2 हो जाएगा, आपका 2f1 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ। क्लियर एवरीबॉडी टिल नाउ? ये वाला आप देखो, फर्स्ट केस सिंपल सा, rays will be coming from infinity because object is in infinity, yes or no? Yes, sir. Okay, very good. So this is the point. So यहाँ से आपका diffraction होगा. So what will concave lens is a diverging lens. It diverges the ray. Yes or no? बोलो. Yes, sir. Okay. So it diverges the ray like this. Diverges the rays like this. So now you can see this thing. They are actually meeting. Yes or no? Are they actually meeting at any point if the rays are diverging? बोलो. No, sir. So what you will do in No, this sir. case? Extend to converge on the Extend, opposite side. yes, extend the conversion in the opposite side. So it would be like this, ठीक है. So थोड़ा सा वो asymmetry आ रहा है, कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है. क्लियर है? ये आपका फिगर होगा बेसिकली एट f2. सो दिस इज एट रे आपकी यहाँ से आ रही है एंड ये रे आगे चली गई. सो ये आपकी, ये आप डॉटेड लाइन से शो करना है. मेरे पास डॉटेड लाइन का कुछ ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए मैंने वो कर दिया. जब भी हमेशा आप वर्चुअली आप इमेज बनाते हो, सो वर्चुअली आप पीछे एक्सटेंड करते हो, तो आप डॉटेड लाइन से करोगे. तो ये वाले केस में भी डॉटेड लाइन होगी. आप मैं मेंशन कर देता हूँ दैट इट इज डॉटेड लाइन, ठीक है. तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखिएगा. सो हमेशा जब एक्सटेंड करो आप, तो डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करना. क्लियर है? Yes, sir. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि मैं अगर डॉटेड लाइन यहाँ बताऊंगा तो वो शेप खराब हो जाएगी सारी, तो वो सिमेट्री आएगी नहीं. दैट इज, इट इज डॉटेड लाइन, ठीक है. क्योंकि इमेजिनरी लाइन है तो डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं. So this is the first case of this topic, of this, sorry, concave lens. Second case is between infinity and optical center. आप कहीं भी रख दो, wherever you place the object between this position, so you will get the same result, ठीक है. Just a second. इसको इस कर देता हूँ. Yeah. So if I erase these lines, yeah. So your object is between anywhere you place, you will get the same result. Okay. So first ray should be parallel to the principal axis. Yes or no? And it will spread out like this.
second ray will be passed from the optical center. Clear है? So if you extend this ray, it will meet at a point here. Clear? Like this. So ये आपका जो point आएगा like this. ठीक है? तो क्योंकि ये यहाँ से पैरेलल लाइन थी, ये पास करेगी, ये जब पीछे एक्सटेंड करोगे तो it will intersect at this point. ठीक है? So this is the intersecting point of these two rays. Clear, everybody? Yes, sir. Any doubt till now? No, sir. Okay, so this is the intersection point. So what will be the image size? Diminished. Diminished. Because just a second, it is a little bit it is not a point size actually, it is a little bit in height. So this is a diminished. So and what will be the, you can say, image nature? Virtual and direct. Virtual and direct. Very good. Between infinity and O, V is equals to आपका होता है at on the same side of the lens आएगा. ठीक है, स्पेसिफिक कोई वो नहीं होती इसकी. और आपका नेचर होता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट. साइज होता है आपका डिमिनिश्ड. Okay, so these are the case of image formation. Now everybody tell me, is this clear to you, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Anybody, any doubt? Raise your hands if you got if you got the point. Okay, abhi raise the hand. Okay, जो भी था did. Okay, only 6 students so far. जो भी था, अच्छा जो भी था ने तो चैट में बता दिया. अब हिबा, जसलीन, श्वेता. Okay, so so ये आपका image, this is all about the image formation of the lenses. Clear है? Yes, sir. Lower your hands. All of you can lower your hand. अच्छा हाँ, एक थोड़ा सा करेक्शन कर लो इसमें. सेम साइड पे तो बनेगा ही बनेगा, और बेसिकली ये आपका F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगा. क्लियर है? यू कैन से बिटवीन F1 between F1 एंड O. और ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन ये है कि आई जस्ट फॉरगॉट टू चेंज इट. सो आपका जो होता है इन कॉनकेव लेंस, आपका ये वाला प्राइमरी होता है फोकस, एंड दिस वन इज योर सेकेंडरी फोकस. ठीक है? उसमें जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस में, उसमें वही होता है. जस्ट फॉरगॉट टू चेंज इट. दिस इज आपका क्या होता है, ये 1 हो गया. दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 2. ठीक है? सो यहाँ पे हमने नहीं लिखा था क्या? यहाँ पे रह गया था ना ये. तो U इज एट इंफिनिटी. ठीक है? V आपका होता है, V आपका कहाँ बनेगा? फोकस पे.
एट F1, ठीक है। नेचर होगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब्दुल्ला साहब नीचे कर लो हाथ। दुख लाइक इट विल बी हर्टिंग यू, आई थिंक सो। साइज आपका होता है हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। इसमें क्लियर है ये सबको? Yes, sir. ओके ये बताओ मुझे आप लोग कि फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Negative. Negative. नेगेटिव। और फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर पॉजिटिव है या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि कभी भी आपको वर्ड कॉन्केव्स मिले, इन इररिस्पेक्टिव मिरर है ये लेंस है, नेगेटिव होगी इसकी फोकल लेंथ, ठीक है। क्योंकि देखो कनकेव लेंस की भी नेगेटिव है, कनकेव मिरर की भी नेगेटिव होती है, और कन्वेक्स लेंस की आपके मिरर की भी पॉजिटिव है और लेंस की भी पॉजिटिव है। क्लियर एवरीबडी? Yes, sir. सो दिस इज ऑल अबाउट योर आपका क्या बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। Those who missed the image formation class of mirror, आप वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, you can watch that. Okay, you can ask from the management to basically for the link of the आपके अकाउंट में तो नहीं मिलेगी मुझे शायद से, आपको शायद से वो, बट आप लिंक ले सकते हो ऑफिशियल नंबर से, ठीक है। So you can rewatch the recording and like those who have attended they can also watch the recording again just for the clearance, ठीक है। ये आपकी डॉटेड लाइन होती है, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। और सो किसी को कोई डाउट इस टॉपिक में, किसी भी लाइक इससे रिलेटेड कुछ भी? देखो रिवीजन क्लासेस है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, लाइक इट्स नॉट कम्प्लीटली कि एक टॉपिक ही होगा, उसमें उसमें मल्टीपल टॉपिक्स हो सकते हैं आपके, लेकिन आपका एटलीस्ट डाउट पूछना पड़ेगा। Sir, ओके हाँ यस सर। sir, when we will start the revision of magnetic effects? We will start from the next class Okay, sir. because light and electricity is already done. I was supposed to do the magnetic but most of the students said like image formation नहीं आता, वो दोबारा से रिवाइज करा दो आप, तो that's why I took the class. Okay, We'll sir. start from the next class, don't worry. Okay, sir. Okay, and after that we'll do the human eye because human eye I've just completed in my batch, so that is a very ताज़ा topic for my batch, तो उनको याद होगा। आप लोगों का पहले हो गया होगा शायद से, आप लोगों को थोड़ा सा लाइक आप लोग भी रिवाइज करके आना, ठीक है। ऑल ऑफ यू कैन रिवाइज ऑल्सो रिवाइज द टॉपिक फ्रॉम योर नोट्स, ठीक है। Okay, sir. तो जस्ट अ मोमेंट, यहाँ से मैं रेस को, हमेशा एक चीज बात याद रखना, आप रेस की डायरेक्शन जरूर मेंशन करना आप, ठीक है। अगर आप एरो मेंशन नहीं करोगे डिडक्शन ऑफ मार्क्स कैन बी देयर, क्योंकि कुछ टीचर्स इस मार्क्स से, मैंने वाज इन 12th क्लास ना, आपका रे ऑप्टिक्स करके ये पूरा जो है ना बहुत डिटेल में होता है आपका, माइक्रोस्कोप वगैरह सब चीज पढ़ोगे, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास, काफी सारे केसेस और डेरिवेशन। तो मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम था 12th क्लास का, एक्सटर्नल वाइवा होता था उस टाइम पे, एक होता है बेसिकली 12th क्लास में आपका। तो व्हाट हैपन, एक बड़े एजेड से टीचर आए थे, तो पता है मेरे प्रैक्टिकल फाइल में रे डायग्राम का वो एक्सपेरिमेंट होता है ना, ये वेरीफाई करने का, मिरर लेंस फॉर्मूला को वेरीफाई करने का एक वो होता है प्रैक्टिकल, इन 12th क्लास आपके भी होगा। तो उसमें मेरे रे डायग्राम वाज कम्प्लीटली गुड, बट क्या था, रे डायग्राम में मैंने एरो नहीं बनाया था, एंड दैट टीचर नोटिस्ड एंड सर्कल डाउन द थिंग। सो आफ्टर दैट मैंने जब 12th के एग्जाम बोर्ड्स दिए, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था रे डायग्राम से रिलेटेड, एंड मुझे याद थी वो मिस्टेक जो मैंने प्री बोर्ड्स उसमें की थी, एक्सटर्नल्स वाइवा में मैंने वो मिस्टेक उसमें नहीं की। तो इसलिए ऑलवेज अगर आपका रे डायग्राम का क्वेश्चन आया तो यू हैव टू ड्रॉ द एरोज एज वेल, ठीक है। क्योंकि मार्क्स कटने के चांस होते हैं, एक आधा मार्क्स काटने, मतलब टीचर्स बैठे होते हैं मार्क्स काटने के लिए, दे आर सपोज टू डिडक्ट द मार्क्स समहाउ, दे डोंट वांट टू गिव यू द मार्क्स फुल मार्क्स इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, they just want to deduct your marks from here and there at any cost, so you don't have to give the chance to cut your marks. Clear everybody? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt?
No, sir. श्योर? No, sir. Yes, sir. ठीक है, सो सो इससे आई डोंट थिंक सो कुछ और इसमें बचा होगा हमारे पास। हम लोगों ने रिविजन वगैरह ये क्वेश्चन किए थे। ओके, सो जस्ट अ मोमेंट, लेट मी हैव जस्ट अ मोमेंट। श्वेता, आपने सेंड कर दिया मैंने जो कहा था आपसे? नहीं सर, क्लास के बाद सेंड अच्छा कर ठीक है, दूंगी। ठीक है, ठीक ठीक, याद से कर देना। जी सर। ठीक, जस्ट अ मोमेंट डियर, आप लोग 2 मिनट वेट करो, मैं एक पीडीएफ उसमें पेस्ट कर देता हूँ नोटबुक में, सो दैट हम लोग कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल किए थे कि अपने रिवीजन में, किसी को याद है? हमने एनसीईआरटी की थी? प्लीज लेट मी नो एटलीस्ट। नहीं की थी क्या? No, sir. ठीक है, चलो अभी कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि 4 मिनट्स हैं, 4-5 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। जस्ट अ सेकेंड, इन भाई साहब को दिक्कत हो रही है, वन नोट भाई साहब को। सर 4 मिनट्स नहीं 3 मिनट्स। अरे अब्दुल्ला साहब, आप तो क्या ही बताएं आपको, क्या ही कहें, आपकी तो बात ही निराली है। हाँ जी। अब्दुल्ला फिर गया। हैं? चलो ठीक है, अब क्या? देखो स्क्रीन, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, स्क्रीन विजिबल है सबको? जल्दी जल्दी से आंसर बता दो आप, Yes, फर्स्ट sir. वाले। यस सर। आंसर बताओ। एनी आंसर? हम्म, बोलो कौन सा होगा? सर ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन है। देखो इतना टाइम नहीं लगाते, इसलिए तो बहुत छोटा सा आंसर है ये। कौन सी ऐसी बेसिकली है जो कन्वर्ज करती है, आपकी कनकेव लेंस ही तो करती है, कनकेव मिरर करती है, और कनकेव कन्वेक्स लेंस करती है। ठीक है, सेकेंड इज, चलो ये छोड़ो, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा कंसेप्चुअल कर लेते हैं। कौन सी कंडीशन में आपका, ये जल्दी से देखो और मुझे इसका आंसर बताओ। Option C. ऑप्शन सी बाय हिबा। ओके, under which of the following concave mirror can form an image larger than the object? Focus and center of curvature, हिबा said, ठीक है। So option B. ऑप्शन बी, when the image is kept at the focus, ठीक है। Option C. ऑप्शन C. सी, ठीक है। Sir, option B. ओके, एनी आंसर, कोई और आंसर किसी का? Sir, हम्म, so we have done these questions in one class. Sir, अ, option C. हाँ, मैं ये मुझे लग रहा है कि हमने किया था। Yes sir, we did this. हम्म, देखो यार, इसका इसमें या तो एक वर्ड मिसिंग है मेरे ख्याल से, रियल इमेज होना चाहिए था, क्योंकि देखो बी और सी, अगर इमेज बोला है तो बी और सी आर करेक्ट, क्योंकि एट बी फोकल लेंथ से कम लेंथ पे होता है, तो आपका कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट से मैग्नीफाइंग इमेज बनाता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहाँ पे देखो बोथ आर, बी एंड सी आर करेक्ट, इफ यहाँ पे अगर इमेज में वर्चुअली या मेंशन होता है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है, या तो इमेज रियल होनी चाहिए या वर्चुअल कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए था, larger than the actual object,
एक्चुअल ऑब्जेक्ट से तो दोनों केसों में ज्यादा बड़ी बनती है ना, देखो हम लोगों ने किया था, ये देखो, देखो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे बनी आपकी, और यहाँ पे भी तो बन रही है आपकी एनलार्ज्ड, यहाँ पे भी तो एनलार्ज बन रही है, दोनों केस में बन रही है। वर्चुअल और इरेक्ट का, वर्चुअल का और रियल का फर्क है, यस और नो? तो यहाँ पे आई थिंक कि कुछ या तो मिसिंग है कुछ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं क्वेश्चन, ये आई थिंक हमने नहीं किए भी थे, तो कोई बात नहीं दोबारा कर लेते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, फिफ्थ वन बताओ। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बाय हिबा, ठीक है। Sir, fifth one, right? यस फिफ्थ वन, Option A. ओके, यस यस इट इज ऑप्शन ए। देखो ना, योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि आपका, यू कैन से कि आपका योर लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल है ना, ठीक है। सिक्स्थ वन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके, ऑप्शन ए। यस ऑप्शन है, क्योंकि लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है रेक्टेंगुलर स्लैब में होता है। सेवेंथ वन, ऑप्शन डी। Option D. ऑप्शन डी, यस कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्योंकि यू कैन सी दैट रेज आर गेटिंग कन्वर्ज एट अ पॉइंट, सो ओनली द कनकेव कन्वेक्स लेंस इज द थिंग व्हिच कन्वर्जेस द रेज, ठीक है। ये बताओ आप, मैग्नीफाइंग, ऑप्शन ए। यस, व्हाट्स द आंसर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन यस, क्योंकि वो कन्वेक्स मिरर इज प्लेस्ड इन द रियर व्यू मिरर्स, सो दैट्स व्हाई दे फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज, क्लियर है। नेक्स्ट वन, ये छोड़ो, ये बताओ आप 11th वन। A full length of image of a distant building can be seen using which thing? Plane mirror, concave mirror, convex plane, tell me. कॉन्वेक्स मिरर। कॉन ऑप्शन Con. बी। कॉन्वेक्स मिरर। Yes, convex mirror, क्योंकि convex mirror have a greater area of view, ठीक है। So in torches, कौन सी which thing is कहाँ पे placed होती है आपकी टॉर्च की जो लाइट होती है, क्योंकि concave lens is concave mirror is used, so where the torch is placed in the headlights or searchlights? सर ऑप्शन ए, वेरी नियर टू द Option A, फोकस। okay, okay, मैं दो Option. आंसर, Option B. ऑप्शन बी। यस ऑप्शन बी होता है, बिकॉज आपकी रेस कन्वर्ज, जो बेसिकली जो पॉइंट सोर्स होता है, जो आपका बल्ब होता है, दैट इज प्लेस्ड एट द फोकस, सो दैट योर रेस कम्स आउट पैरेलल, your beam of light comes out parallel, so that's why it is placed near focus, clear? Because if you place between pole and focus, so light rays which are coming, which will be distorted, not in a single line, okay? So that's why it is between near the focus, okay? Okay, now 14th one, the figure is placed aside beside this question, that is a rectangular slab. So option B. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। Option B, okay. Any answer apart from this? Assalamu alaikum, sir. Alaikum Assalam Faraz, just wait for a 2 minute here, okay? I'm just coming. So option कौन सा ऑप्शन बता रहे थे आप लोग? बी,
Yes, Yes, sir. option B, because ray has entered, then it got displaced, then again. So this is emergent. So there is a lateral displacement. Okay. So that is all for today's class. Okay. आई होप आप लोगों को जो क्लियर ये इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर सारी चीज आपने आप लोग सभी कह रहे थे लाइक कि क्लियर है सब कुछ, ये प्लीज लेट मी नो इफ दिस क्लियर और नॉट अगेन वंस अगेन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास देन। टेक केयर, गुड बाय, शब्बा खैर।